again to you all, dear friends. Today we are going to discuss the stats portion. As first lecture means introduction we have given in our previous lecture. So दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में एज्यूम मीन फाइंड करना सिखाया था. दैट वाज द मीन of ungrouped data, and one example I had given the mean of group data by the direct method. So here once again we are going to discuss the mean of the group data. So दोस्तों, first of all in this chapter stats, as you know that the analyzing of data is called the stats, and how to analyze the data by finding the measures of central tendency. And the measures of central tendency is of three types: mean, median and mode. So we are going to start first part, mean. To find the mean of the group data we have to read three methods. mean find करने के हम तीन methods यहाँ पे सीखेंगे. Then afterwards we have to read mode, afterwards we have to read median. So we are going to learn the mean. हम आपको इसमें एक मेथड ऑलरेडी सिखा चुके हैं अपने पहले लेक्चर में, अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बट फिर भी हम इस यहाँ पर आपको दैट पार्ट मीन्स दैट डायरेक्ट मेथड एक बार फिर से हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा वी हैव थ्री मेथड्स. First method is called direct method. Direct method. And in this direct method, as we have discussed already, xi, which is the symbol of denoting mean, is equals to sigma fi xi upon sigma fi. This is the formula to find the mean in direct method, where f is called frequency, x is called the observations, and this sigma means it is called summation. Means this symbol is called, इसको आप समेशन भी कर सकते हैं या फिर आप इसको सिग्मा भी कह सकते हैं. मीन्स इट्स मीनिंग इज टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर. f is called frequency, f is frequency, and x is called observations. Right friends, this method we have already read. हम आपको मौका मिलेगा तो एक बार फिर से इसको डिस्कस करेंगे. But the other two methods, as you know that in this direct method हमको calculations ज़्यादा करने पड़ते थे. Means multiplication, addition, subtraction, each and everything we are doing. So to reduce these calculations there are two more methods, and the second method is called assume mean method. Assume mean method. In this method the formula of this is x bar is equals to a, which is assumed mean, plus sigma fi di upon sigma fi. So here, as you have already discussed, f is the frequency, x bar is the mean, means we have to explain a and d. A is called assumed mean,
assumed mean taken from the observations, means any of the value taken from the observation. This assumed mean taken from the observations, right? Now di is observation minus a, means it is the difference of this d is called deviation, which is equals to xi minus a, means it is the difference of observation to the assumed mean, right? This is called difference also, this is called deviation also. Okay, so this is the second method, assume means, which we will discuss right now, because direct method we have already discussed you. Second method और third method अभी हम discuss करने जा रहे हैं. First you have to see the third method, and this third method of finding mean is called step deviation method. Step deviation method. In the step deviation method, our formula is xi means mean is equals to a plus sigma fi ui divided by sigma fi multiplied by h. Now here the value ui and h is increased. We have to define what is u. U is called, how to find u, this d divided by h. D is the difference of xi minus a. So u is called d by h, where h is called the size of class interval. Size of class interval. Right friends, where h is called size of class interval. So अभी हमने आपको तीनों methods discuss किया. These three methods belonging to find out the mean of the group data. Means to find the mean of the group data, we have three formula, or we have three methods. First method is called direct method, in which the formula x bar is the notation of mean. X bar is called mean, which is equals to sigma fi xi divided by sigma fi. The second method is assume mean method, which is equals to, in this, x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi, where a is assumed mean taken from the observations, and d is xi minus d is the difference of observation to the assuming number. Afterwards, the third method is step deviation method. X bar is equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi multiplied by h, where ui is di upon h and h is called size of the class interval. Right friends? So first of all, you have to note down the formula of these three methods and learn it by heart. After learning it, then how to apply, ये हम आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे. तो इसका पहला मेथड जो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, उसको आप रिवाइज कीजिएगा. आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे. राइट? So let's see this assume mean method and step deviation by the same question as we have discussed in the first method. हमने आपको पहले बताया कि ये दोनों मेथड्स क्यों डेवलप किए गए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. क्यों? क्योंकि इस डायरेक्ट मेथड में हमको मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉन्ग करने पड़ते थे. उस कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए
यहाँ पर दो और मेथड्स डेवलप किए गए एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स आर कैलकुलेशन विल बी ईजी, आर यू कैन से हम अपने कैलकुलेशन को अपने फिंगर टिप पे सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स वाई दीज मेथड्स आर डेवलप्ड. ठीक है, अब हम इस मेथड्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारा कैलकुलेशन कैसे इजी होता है. ओके डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स कम ऑन द सेकेंड मेथड, एज्यूम मीन मेथड. कल हमने सेम क्वेश्चन डिस्कस किया था इन द एग्जाम्पल नंबर 1, बट वहाँ पे हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था मीन फाइंड करने के लिए. हियर वी आर गोइंग टू यूज़ टू फाइंड द मीन by the second method, which is called assume mean method. So in that there was the class interval जो हमने already बनाया था and the frequencies of means number of students. अभी हम इसको proceed करते हैं किसकी तरफ, assume mean method की तरफ. Right friends, as we have discussed already in the assume mean method, x bar means mean is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi. राइट दोस्तों. सो चलो अभी हम क्या करते हैं, इन दिस द फर्स्ट कॉलम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्लास मार्क्स विच इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन. और ये ऑब्जर्वेशन है क्या, हाउ टू फाइंड, ये भी मेथड हमने शायद आपको डायरेक्ट मेथड में एक्सप्लेन किया था. एक बार फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं. I think you all have remembered this formula of class marks is equals to, we have to use class mark is equals to upper class limit plus lower class limit divided by 2. Now अभी क्वेश्चन ये राइज होता है अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या होता है. सो दिस अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास limit we will get from the column of class interval. So the first number of each and every class is called lower class limit and the second number of this class is called upper class limit. So सभी respective class interval का हम class marks find करेंगे. Suppose ये column का class interval find करना है, so we have to take upper class limit is 25, lower class limit is 10. So 25 plus 10 is 35 divided by 2 is 17.5. और ये हमने आपको फाइंड करके भी दिखाया था, राइट. सो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द क्लास मार्क्स ऑफ दिस क्लास इंटरवल 25 and 40 which is 65 divided by 2 that is 32.5. राइट फ्रेंड्स, सेम एज इसका क्लास इंटरवल फाइंड करते हैं इस क्लास का 40 and 55 which is 95 divided by 2, 4 2s are 8, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 47.5. Of this class interval that is 62.5. Of this class interval 87.5 and of this class interval 92.5. राइट फ्रेंड्स, इसको आप चेक कर सकते हो विद बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. सपोज अभी हमने रैंडमली लिया 25 to 40. सो अपर क्लास लिमिट इज 40 प्लस लोअर क्लास लिमिट इज 25 divided by 2 which is equals to 65 divided by 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 32.5 which you have written. और भी कोई चेक करना चाहते हैं, सपोज 40 to 55 वी आर गोइंग टू चेक. सो 40 to 55, in the 40 to 55 let's see what will be the class marks. 55 is the upper class limit plus 40 is the lower class limit divided by 2. It is 95 by 2 which is 2 4s are 8, 2 7s are 14, 47.5. Similarly, this you can check. Its class marks will be 70 plus 55 plus 55 divided by 2 which is 100
25 by 2, that is called 62.5. If you are going to find the class marks of this class interval, so 70 plus 85 is 155 divided by 2, 2 7 are 14, 2 7 are 14, 2 7 are 14.77.5. Is it right? That is 78, 150, 155 is. Afterwards, when you are getting this one, 185 divided by 2, 2 9s are 18, 2 2s are 4, right? Now we are going to find out, after getting this class marks, we have to complete this column, that is of difference d, और इसका formula already it is written here, xi minus a. Now the question is arising, what is a? अभी इस a की वैल्यू आप इस क्लास मार्क्स में से कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू. आप फर्स्ट भी ले सकते हो, सेकंड भी ले सकते हो, थर्ड भी ले सकते हो, लास्ट भी ले सकते हो. इट इज अप टू यू. तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट को ही या सेकंड को ही ले लेते हैं, दैट इज दिस नंबर इज कॉल्ड a, which is assume mean. What we have taken? We have taken a is equals to 32.5. a को 32.5 चूज किए. सो हमने इस a की वैल्यू, दैट इज assume mean, आप क्लास मार्क्स के कॉलम से चूज करोगे, और कोई भी वैल्यू, ये अप टू यू, इट इज डिपेंडिंग, आपकी जो इच्छा है उस वैल्यू को सपोज कर सकते हो. तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू 32.5 सपोज किया. नाउ लेट अस फाइंड आउट द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ di. सपोज आप फर्स्ट कॉलम में d फाइंड करना चाहते हो, सो d इज इक्वल्स टू x माइनस a मीन्स 17.5 माइनस 32.5. सो फॉर द फर्स्ट d इज इक्वल्स टू 17.5 minus 32.5. So this will be in negative. 0.50, 12 minus 7 is 5, and 2 minus 1 is 1, means what we are getting, minus 15 is the value of this t. So इसकी वैल्यू minus 15 आई, minus 15, right friends? चलो अभी सेकेंड रिस्पेक्टिव फाइंड करना है d की वैल्यू. सो ये x की भी वैल्यू है और आपका एज्यूम मीन a की भी वैल्यू. सो 32.5 माइनस 32.5 विल बी इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dy ऑफ दिस रिस्पेक्टिव क्लास. सो इसमें 47.5 माइनस 32.5 विच इज प्लस 15. Similarly, we will get 15, 30, 45 and 60 are the values of this di. आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन लगे इस कॉलम में ये वैल्यू कैसे आई, तो आप सेम फॉर्मूला यूज करना, ये xi लेना और सब में से 32.5 को माइनस कर देना, बिकॉज a की वैल्यू हमने 32.5 एज्यूम किया है. आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट the value of fi into di, means fi multiplied by di, और di की वैल्यू आपके पास ये ऑलरेडी आई है. सो fi means the number of students, इसका कॉलम, with respect to the value of di we have to multiply. So let us multiply and find the complete the column of fi into di. So fi is 2, respective d is minus 15, so 15 2s are 30 minus 30. fi is 3, its respective d is 0, so 0 into 3 is 0. 17, 7 and 15, 15 7s are 105. Now this 6 multiplied by 30, 180. 6 multiplied by 45, 6 5s are 30,
कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, 270. 6 multiplied by 60, 6 6 जा 36. This is the value of fi into di. मीन्स fi कॉलम को di कॉलम से रिस्पेक्टिव कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सिग्मा fi into di. मीन्स सम ऑफ दिस कॉलम जिसमें एक माइनस नंबर है एंड द रेस्ट आर पॉजिटिव. सो सिग्मा fi di फाइंड करते हैं with this column sigma fi into di equals to, let's see what will happen. इसमें से 30 हमें माइनस भी करना है, तो इसको तो पहले सेपरेट रहने दो. इन सभी पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं. सो 5 8 7 15 प्लस 6 21 कैरी 2 3 4 5 6 7 8 9 915 माइनस 30 कर देते हैं. दैट केम 5 11 minus 3 is 8 and here it is 885 is the value of sigma fi di. Right friends, means इन सभी वैल्यूज को ऐड करने पर 85 is coming. Now substitute these values in your assume mean method formula. We will get our answer easily. So xi, as you know that mean a आपने क्या सपोज किया था 32.5. So 32.5 plus sigma fi di which is 885 divided by sigma fi, that is the total number of students, which was 30. So let's simplify it. 32.5 plus, we can simplify. So 3 2s are 6, 3 2s are 6, 2 is remaining 28, 3 9s are 27 and 3 5s are 15. 295 divided by 3 10s are 30. So we will get 29.5 when 295 divided by 10. अभी इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं. So we will get 0, 9 to 11 112, 3 to 5 1 6. 62 is our required mean by the method of assume mean method. So दोस्तों, हमने जो आपको डायरेक्ट मेथड सिखाया था उस मेथड से भी इस टेबल का मेन 62 ही आया था. आप आंसर चेक कर लीजिएगा. मीन्स मेथड कोई भी हो लेकिन आंसर हमारा सेम आना चाहिए. मेथड मायने नहीं रखता, आंसर मायने रखता है. सो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, कोई भी मेथड यूज़ करोगे. सपोज ये क्वेश्चन आया, कोई स्टूडेंट डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहा है, कोई स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहा है और कोई भी स्टूडेंट्स एज्यूम मीन मेथड यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सबका आंसर डिफरेंट आएगा. आंसर सबका सेम आना चाहिए. राइट फ्रेंड्स? सो आफ्टरवर्ड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द थर्ड मेथड विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड. और उस स्टेप डेविएशन मेथड में आपको सिर्फ थोड़ा सा अ लिटिल बिट चेंजेस इन दिस कॉलम. इस कॉलम में हमें सिर्फ आपको दो ही चीज़ें चेंज करनी है. उसमें fi di की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम इस कॉलम को रब करेंगे और दो और कॉलम इसमें इंक्रीज करेंगे, विच इज़ यहाँ पे u का कॉलम बनाएंगे और नेक्स्ट कॉलम विल बी fi ui. तो इसको समझने के बाद अभी आपको ये क्लियर अगर हो गया होगा तो हम आपको स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड भी विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. राइट? सो दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू यूज द स्टेप डेविएशन मेथड. राइट फ्रेंड्स? सो लेट्स सी आवर थर्ड मेथड विच इज स्टेप डेविएशन मेथड. इस मेथड में आपको जो मेथड आपका एज्यूम मीन मेथड है, सेम स्टेप फॉलो करने हैं
ओनली फ्यू कॉलम्स आर इंक्रीजिंग इन दिस, सभी कॉलम्स सेम है। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे? आपको दो चीजें दी रहेंगी, क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसीज इसको बोलते हैं। क्लास मार्क्स आप सेम मेथड से फाइंड करेंगे एज फॉर्मूला हमने आपको एक्सप्लेन किया, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2। फिर डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे विच इज एक्स आई माइनस ए। आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए यू विच इज डी आई अपॉन एच। अब क्वेश्चन ये राइज होता है एच की वैल्यू क्या फाइंड करनी, क्या रखनी है? हमने आपको बताया था h इज कॉल्ड साइज ऑफ द क्लास। h की वैल्यू क्या होती है? साइज ऑफ क्लास। और यहाँ पे साइज ऑफ क्लास मीन्स इसका डिफरेंस फाइंड कर लेना। 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 15। किसी भी क्लास इंटरवल की का साइज फाइंड करेंगे तो आपको देखेंगे आपको 15 ही मिलेगा। सो फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ये क्लास साइज डिफरेंट भी मिलता है, तो उसमें आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन में आप करोगे क्या, इस h की वैल्यू को वही वैल्यू सपोज करना जो वैल्यू इस d के वैल्यूज को प्रॉपरली डिवाइड कर सके। आर यू कैन से द HCF ऑफ दीज कॉलम di, सपोज 15, 15, 30, 45 एंड 60। इसका HCF भी 15 आ रहा है और क्लास साइज भी 15 आ रहा है। तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप क्लास साइज ही लो, एक ऐसी वैल्यू भी हम ले सकते हैं जिससे कि ये di का कॉलम सिंपली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलो सपोज वी आर टेकिंग द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू 15 विच इज साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ क्लास, राइट फ्रेंड्स। अभी u की वैल्यू फाइंड करते हैं ui। सो माइनस 15 डिवाइडेड बाई 15 विच इज माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाई 15 विच इज 0, 15 डिवाइडेड बाई 15 इज 1, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। अभी u की वैल्यू आपको मिल गई -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो हम fi मल्टीप्लाइड बाई ui फाइंड करते हैं। मीन्स फ्रीक्वेंसी को इस ui के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्टिव नंबर्स। 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 इज -2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज 0, 7 1 जा 7, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। और अभी हम इस कॉलम का fi ui का सम फाइंड कर लेंगे, सिग्मा fi ui। इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, जिसमें 2 एक माइनस नंबर है जो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सो ऐड कर लेते हैं सभी नंबर्स और 2 को माइनस करते हैं। 7 2 9, 8 17, 17 प्लस 4 इज 21, कैरी 2, 2 2 4, 5 6 माइनस 2 करेंगे। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस इज 59। मीन सिग्मा fi ui की वैल्यू हमारी क्या मिली, 59। और ये 59 किसका समेशन है, दिस fi ui कॉलम का, राइट फ्रेंड्स। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला of step deviation method. As you know that mean for the step deviation x bar is equals to a plus sigma fi ui divided by sigma fi multiplied by h। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। a की वैल्यू आपका सेम 32.5, so 32.5 plus sigma fi ui is 59 divided by sigma fi is 30 multiplied by h की वैल्यू 15। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 15 is simplified 30, 2 जा
सो वी गॉट 32.5 प्लस 59/2, डिवाइड करते हैं 32.5 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 0.25 ज़ा 10. Again we will get the value 62 is the mean value, but the method is step deviation method. दोस्तों हम ये उम्मीद करते होंगे कि आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नहीं भी क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करके, एक बार नहीं, जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक कंफर्म अच्छे से रिवाइज करो और नेक्स्ट अपकमिंग एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करो. राइट फ्रेंड्स?